उससे बातें नहीं है, उससे ही तो कई रास्ता आंखें नहीं है, उससे ही तो बातें कही है, उससे ही तो मेरा है रास्ता तूने कहा। Did I write the shit here, bro? आँखों में आँखें नहीं है, उससे ही बातें नहीं है, उससे ही तो मेरा है रास्ता। इसके नहीं खाने से बच्चे नहीं रहते हैं। आँखों में आंसू नहीं, उससे ही तो उससे ही तो मेरा है। रिवीजन तो हो गया, ठीक है। फाइनली भाई बहुत दिन बाद फासले तू कहीं हमसे आंखों से थोड़े बाद कोई भी 8 8:30 हुए 9:30 तक तब तक फटाफट ठीक है। स्पीड वाला स्पीड HTML defines structure of web page. CSS calls for a style sheet, style of program, logical program, waiting and equal to attributes, listener,
link rel style state href styles dot universal selector, element selector, id selector, class selector. (96 pixel is equals to 1 inch. 96 pixel is equals to 1 inch. Font size 2 pixel. Box model in spaces, height, width, border, padding. हाइट विड्थ बॉर्डर पैडिंग मार्जिन. तो जो बॉर्डर होता है उसके बाहर मार्जिन होता है, बॉर्डर के अंदर पैडिंग होता है. हाइट और विड्थ तो कुछ तो पता ही है. हाइट बॉर्डर रेडियस सब सर्कुलर बना सकते. पैडिंग इज इनसाइड बॉर्डर. टॉप राइट बॉटम मार्जिन का स्पेस अराउंड इनलाइन स्पेस डिस्प्ले इनलाइन होता है, मतलब जितना स्पेस रिक्वायर्ड रहेगा उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा. ब्लॉक्स ऑल द विड्थ का पूरा स्पेस ले लेगा. इनलाइन ब्लॉक सिमिलर टू, बट इसमें अपन मार्जिन और पैडिंग सेट कर सकते हैं. नन अल्फा ऑपोसिट 0 to 1 होता है. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. RGB ये स्टैंड फॉर ऑपेसिटी. यूनिट्स इन CSS परसेंटेज m rem परसेंटेज डिफरेंस साइज एज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंट. पैरेंट क्लास का साइज से वो रहता है. फॉन्ट ऑफ पैरेंट एस्टिमेट टैग फॉर फॉन्ट साइज. पोजीशन स्टैटिक रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड. स्टैटिक मतलब डिफॉल्ट पोजीशन, रिलेटिव मतलब अपने खुद के इनिशियल पॉइंट से, एब्सोल्यूट मतलब पैरेंट टैग से, फिक्स मतलब जेड इंडेक्स कंट्रोल लेयर और जेड इंडेक्स का नहीं पता. बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, फ्लेक्स बॉक्स मॉडल, क्रॉस मीन. horizontal vertical, direction, row reverse, column reverse, row 1 2 3 reverse 3 2 1, column 1 2 3 3 2 1. Next properties, justify content horizontal. justify content मतलब justify content and align item. justify content मतलब horizontal, align item मतलब vertical. align content space button according to our stretching. ये इसके लिए यूज होता है. क्या बोलते हैं, तो if you want to make a responsive website and media query बताना है इसका transition between two state of environment. Grid to make your work in structure form and create display. Grid मेरा हाइलाइटर कहाँ गया भाई? JavaScript is a programming language that uses JavaScript. JavaScript is a programming language very easy to give instruction to computer console.log is the message. Connect HTML and CSS variable. Container for data storage.
variable are container to variable are container to data store dynamic variable rules here different case sensitive होता है declare variable can be redeclared and updated let can't be redeclared or updated but update होता है const can't be redeclared but updated data types number string boolean null undefined boolean small symbol number string boolean पता नहीं क्या object collection of different variable object is collection of different variable operator arithmetic plus minus modulo रिमाइंडर को देता है इंक्रीमेंट असाइनमेंट कंपैरिजन इक्वल टू नॉट इक्वल टू असाइनमेंट में शायद एंड और वगैरह नहीं लॉजिकल में एंड और नॉट कंडीशन इफ लेट एज इज इक्वल टू इफ अगर ये है तो ये करता else if से अपन if we want more outcome if else में से दो ही चीज़ हो सकती है if या फिर but else if में if else ternary operator work on 3 operand ternary operator work on 3 operand condition true loops for loop for I का वैल्यू कब तक रन करेगा किस स्पीड से रन करेगा while मतलब जब तक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू में तब तक रन करेगा do while the loop always execute once even if condition is false callback execute before condition tested do while string sequence of characters used to represent text embedded a way to have embedded expression in string this is string interpolation to create string by doing substitution of placeholder string this expression string method in JavaScript built-in function to manipulate string or to uppercase string to lowercase string भाई बहुत सारी methods होते हैं these are just few example array is a collection of items in a linear way indices मतलब 0 1 2 3 looping over an array for loop for password.log using for let marks is equals to marks for let marks of marks password.log marks array methods in JavaScript push add to end pop delete from end and return push add to end pop delete to end to string convert array to string concat join multiple array and return result join multiple array and unshift add to start shift unshift add to start and return add to start unshift add to start and return डिलीट फ्रॉम स्टार्ट ब्रो फक शिफ्ट से डिलीट होता है अनशिफ्ट से ऐड होता है स्लाइस रिटर्न अ पीस ऑफ एरे स्टार्ट स्प्लाइस चेंज ओरिजिनल एरे ऐड रिमूव रिप्लेस फंक्शन block of code that perform a specific task can be reinvoked whenever we want invoke function definition function name indices ब्रैकेट वाला और कंडीशन क्या दफा हो तुम दिमाग एरो फंक्शन भी सेम होता है बट उसमें होता है एरो फंक्शन नहीं होता इंडाइसेस फंक्शन नेम लेट फंक्शन नेम इंडाइसेस है तो है पैरामीटर बोलते इसको लेट वेरिएबल फंक्शन नेम जो भी फंक्शन का नाम है फंक्शन ऑब्वियसली नाम है
इंडेक्स कुछ रहेगा वैल्यू का, और या फिर इधर क्या दफा हो तुम। इट्स बट इट कांट बी यूज फॉर लाइक बिग वर्क। अगर आपको छोटा सा काम करने में भी क्या ना है, स्मॉल वर्क लाइक फॉर इच लूप इन और map is used to create a new array with fuck. It was orbital. Map used to transform an array to change value of an array. Oh, change value of an array. बहुत complicated. Map is used to transform an array to change value of an array. If you want to double an array function, double it. Filter function. Filter value inside array to filter anything such as greater than I, etc. To find add value. Function is odd x, return x. Array filter. Introduce function. Come with single value of an array. मतलब कुछ वैल्यू फिल्टर आउट करके निकालनी है, तब यूज मतलब पूरे एरे का एक सिंगल वैल्यू में ऐसा। इसको यूज कैसे करते हैं यार, उसको भी देख रहा है। ऐसा नहीं है आपको बस उनका पर्सनैलिटी पता, बट कैसे यूज करते वो भी तो आना चाहिए। जैसे देख एरे, इफ यू वांट टू यूज मैप, नम मैप फिल्टर previous current क्या होता है, create an array, perform some operation and reduce the array to single value. It returns the single value. To print largest number and array to so it is equals to window object represent an open window in browser. It is a browser object, not JavaScript, automatically created by browser when you open your code in browser. It is a global object with a lot of property. DOM is a web page that loaded and browser created document object. When a web page is loaded, document create a fuck. When a web page is loaded, browser create a document object model DOM. Each individual as considered as node के अंदर node. We can access HTML in JavaScript. We select ID, class or tag. उससे अच्छा अपन what we do is we prefer using query selector. Query selector से आप ID select वो सब कर सकते हो. Query document dot query you can only select one first one and all से आप सब कर सकते हो. Properties use DOM attributes मतलब additional information in an element. Change in the state event in JavaScript, change in the state of object. क्लिक बहुत सारे इवेंट होते हैं, क्लिक इवेंट होता है, माउस इवेंट यानी माउस के अंदर क्लिक आता है, माउस कीबोर्ड फॉर्म प्रिंट बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. चेंज स्टेट ऑफ इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, नोड डॉट event handling in JavaScript, node dot event. If you want to handle code in JavaScript, is event object. It is a special object that has detail about event. All event handler have access to event object properties and method. Event listeners, function that are waiting for event can create event listener for single event. The callback reference should be the same.
Prototype in JavaScript. JavaScript object is an entity having state and behavior property and method. JavaScript method has special properties called prototype. We can set note if an object and prototype have the same method. Class blueprint that defines all method, parameter, properties gonna have but doesn't give information. How's blueprint? While object gives the information like product, all values, color, furniture, all the accessories. Color also no. Class is a program that construction method is inheritance is JavaScript. It is a passing down properties from parent class to child class. It was used to call constructors parent class to access the parent property. Wow, error handling try कैसे आप handle तो this helps to continue code without continue code from other line except error line. Try catch this helps to continue code from other line except error line. Error. Try code catch error. Try code catch error. Try this code catch this late console the try. यहाँ पे अपन ने क्या करा ट्राई करा ये कोड अगर नहीं होता है कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर कॉल बैक प्रॉमिस असिंक अवेट. इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है और असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है. सो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में होता है कि आपने कोड लिखा है तो जो कोड रन होगा स्टेप बाय स्टेप रन होगा. जैसे आपने पहले इसमें करा है कि भाई बंदा डेट पे जाएगा, दूसरे पे कर रहा है दूसरे स्टेप. सिंक्रोनस और अनसिंक्रोनस का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. पहला डेट पे जाएगा बंदा, उसके बाद उसको खाना खिलाएगा. डेट पे जाएगा, खाना खाएंगे, खाना खा के वो किस करेंगे, किस करने के बाद घर चले जाएंगे. ये हो गए 4 स्टेप, ठीक है. एक स्टेप में हुई है, ठीक है. बट असिंक्रोनस में ऐसा होता है नहीं इसका एग्जांपल अच्छे से देना पड़ेगा. समझ जाए ना, मैं खुद समझ रहा हूँ. Callback. A callback is a function as an argument to another. Callback है nested callback style. Promise is for its object and पेंडिंग फुलफिल्ड, पेंडिंग रिजॉल्व रिजेक्ट. पेंडिंग मतलब होने का है, रिजॉल्व मतलब सॉल्व हो चुका है, रिजेक्ट मतलब कैंसिल हो चुका है. प्रॉमिस हैज स्टेट पेंडिंग फुलफिल्ड एंड सब रिजल्ट और फुलफिलमेंट डॉट देन प्रॉमिस डॉट देन रिजल्ट फॉर catch. Promise chain, we will get result after first is successful. Get data. Async await, always return a promise. Async function await pauses the execution of the surrounding async function. Promise is stated. Await can only be used with sync. It is there to use compared to other promise.
sync function get all data console dot log await get data console log get in data where we want to confirm from this it gets immediately invoked function expression. IIFE is a function that is called immediately as soon as it is defined. It is a function but also अलग से कॉल नहीं करना होता, जहाँ लिखा है वहाँ पे ही एग्जीक्यूट होता है. Fetch API provides an interface for fetching, sending, receiving resources. It is used to request and response object. That method it is used to fetch resource data from API. Terms in API JavaScript. AJAX, it is a asynchronous JavaScript XML. JSON is a object notation. JSON method return a second promise that resolve with result of passing the response body text as a JSON. Input in JSON now. Return and respond. तेरे आगे तो कहीं इससे भी तो 369 उठा ले रे दीवार. अरे क्यों उठाना है जी. अनिकेत अरगरी body boy Git and GitHub. Git is a version control system. Git is a version control system is a tool that helps you track changes in code. It is locally, not. Git version control system is a tool that version control system that tracks changes in code. Git function GitHub Git locally करता है, GitHub globally. Repository folder change connect. तू है कहाँ ऐसा कर मैं फासले GitHub to PC to GitHub. So आप GitHub पे रेपो क्लियर करो क्रिएट करोगे उस रेपो को. आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड दैट इनटू योर कोडर कोडिंग सॉफ्टवेयर. फिर वहाँ पे आपको करना पड़ेगा जैसे लाइक इफ यू क्रिएटेड ए रेपो, आप क्या करोगे, clone a repo to a local machine via link. If you want to copy GitHub repo to system to clone in terminal git clone https link आपको repo पे मिल जाएगी. ठीक है. If you are using VS Code then we have to add file and then commit. Change directory if you want to go to folder to another folder. Change directory to get a cd dot hidden files. Show you the hidden file. Status show status of code. Git status for type modified and trackable and tracked staged. We change file or folder then it will show modified. If we add new file or folder then it will show untracked. Stage file is ready to be committed. Add it will show you stage. It will show you. It will show you stage. Add new or change files in your working directory to git staging area. Git add file name to add files, git add to add files, commit to record a change, pc to GitHub, git pay file repo create clone changes add commit push git branches. If a multiple pair work on a different Fork is a new repository that shares code with visible setting with the original.